नमस्ते बच्चों, आज हम तीसरा पाठ, इस पाठ का नाम है फलों की कहानी का अर्थ समझेंगे। टुडे विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लाइन। सविता को फल खाना अच्छा नहीं लगता था। दैट मीन्स सविता डिडंट लाइक टू ईट फ्रूट्स। उसकी माँ रोज उसके लिए फल लाती थी। Her mother used to bring fruits for her every day. उसे फल काट काट कर देती थी। She used to cut the fruits and give it to Savita. वह सब फेंक देती थी। Fake means throw. She used to waste the fruits. एक दिन जब वह सो रही थी, here वह is using for Savita. That means one day when she was sleeping, तब उसे सपना आया। सपना means dream. She saw a dream. Now let's see what she saw. सपने में एक एक फल उसके पास आए और उससे बातें करने लगे। That means in the dream she saw different fruits coming and talking to her. Now let's see what all fruits were there. First one was save. Save means apple. Apple said, सेब बोला, सविता बहन, मैं फलों का राजा हूँ। बहन means sister. So apple is saying, Savita sister, I am the king of fruits. मुझे खाओगी तो कभी बीमार नहीं पड़ोगी। बीमार means sick. The sentence meaning is, if you eat me, you will not fall sick. Now, after apple comes the grapes, angur. Angur, in English we say grapes. Now, let's see what the grape is saying. मैं हूँ हरा भरा अंगूर. So, we know that grapes are in different colors, but here we are talking about green grapes. I am green in color. मुझे खाने पर तुम्हारे गाल सुंदर हो जाएंगे। Here गाल means cheeks, सुंदर means beautiful. So the grape is saying, if you eat me, your cheeks will become beautiful. कितना मीठा मीठा हूँ. That means I am sweet fruit. खाकर तो देखो. Eat me and see it. In the bracket it's given, तभी केला मटकते मटकते आया. मटकते मटकते means it's a word used for a style of walking. So केला means banana. In the bracket it's written मुस्कुराते हुए, the smiling face. Now let's see what the banana is saying. सविता बहन, that means Savita sister, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ. I am not less than others. अगर तुम मुझे खाओगी, if you eat me, तो तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा. You won't have stomach pain. Here पेट meaning is stomach, दर्द means pain. In the bracket, केले के पीछे अमरूद नाचते आया. नाचते means dancing. So now the next fruit is guava. It came dancing towards Savita. Now let's see what Amrud is speaking about. Amrud, सखी, friend, मुझे खाने पर तुम्हारे दांत मजबूत हो जाएंगे. If you eat me, your teeth will become strong. After guava came pomegranate. Anar means pomegranate. Now let's see what anar is saying. मैं हूँ लाल लाल रस भरा अनार. I am red juicy fruit. मुझे खाओगी तो तुम्हारे गाल लाल लाल हो जाएंगे. If you eat me, your cheeks will become red. बड़ी सुंदर लगने लगोगी. You will look very beautiful. In the bracket, तभी लुढ़कता हुआ गोल मटोल खरबूजा आया. लुढ़कता means falling. गोल मटोल means round.
So then came the fat round muskmelon. Kharbuja is a fruit. In English we say muskmelon. Now let's see what Kharbuja is saying. मैं हूँ रस से भरा फल. I am very juicy fruit. मैं गर्मी में प्यास बुझाता हूँ. गर्मी means summer. प्यास means thirsty. So in summer I help to remove thirst. मुझे खाओगी तो प्यास नहीं लगेगा. If you eat me, you won't feel thirsty. In the bracket, इसके बाद संतरा भी आ गया. So संतरा means orange. Now let's see what orange is speaking about. ओहो, मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया? Why did you all left me behind? नारंगी रंग का हूँ. I am orange in color. मुझ में अनेक बीज है. That means I have many number of seeds. मेरे बीज चाहे कड़वे हो. The seeds are bitter in taste. कड़वा means bitter. पर मैं तो मीठा मीठा और रस भरा हूँ. It's telling my seeds are bitter in taste, but I am very sweet and juicy. मुझे खाने पर खांसी जुकाम कभी ना आएगा. खांसी जुकाम means cold and cough. So if you eat me, you won't get cold and cough. Now सभी फल means all together, all the fruits together. They are saying हमें खाओगी तो ताकतवर बन जाओगी. समझी? So हमें, if you eat all these fruits, you will become strong. Samjhi means understood. Now let's see what Savita is saying. हाँ, मैं समझ गए. Yes, I understood. माँ कितनी मुश्किल से फल लाती है, काट काट कर देती है. Mother brings fruit for me with so much difficulty and cut it and give it to me. परंतु मैं कभी नहीं खाती. But I always waste it. अब मैं ऐसा नहीं करूँगी. रोज फल खाऊंगी. Now from today onwards I won't repeat it and I will eat fruits every day. Now सविता को फल खाना कभी अच्छा नहीं लगता था, परंतु अब वह फलों के गुण समझ चुकी है. So from this incident she understood the importance of eating fruits. वह फलों के साथ नाचने गाने लगी. She started singing and dancing with the fruits. They said, रोज रोज फल खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से. So it's a famous proverb. We say an apple a day keeps the doctor away. The next line. उस दिन से सविता ने माँ के दिए फलों को खाने से मना नहीं किया. From that day onwards, Savita never said to her mother. वह समझ गई थी कि फल खाना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. So she understood that for good health we should eat fruits every day. This is the meaning of the story फलों की कहानी. I hope you all understood it. Now there's an activity for you. You have to read the story, take a voice clip and upload it in Microsoft Teams. आज के लिए बस इतना ही. अब हम अगली क्लास में मिलेंगे. धन्यवाद.